This is the last video in Drishti National Current Affairs series. So let's start. The first is Shah Bagita scheme launched by Delhi's Lieutenant Governor. So Shah Bagita scheme किसका है? Delhi का है. Aim to increase the involvement of residential welfare association in optimal tax collection and waste management system. Now ये जो residential welfare association है इसको ऑप्टिमल टैक्स कलेक्शन के लिए रिवॉर्ड भी किया जाएगा. मीन्स अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करते हैं, लाइक इफ 90% ऑफ द टैक्स इज बिंग कलेक्टेड, देन they can utilize the 10% of the tax collected for development work across their areas. And ये जो waste management system है इसको community participation के through किया जाएगा. Then the next is biodiversity policy 2022. It's by NTPC and India, which is India's largest energy producer. Basically, to achieve this biodiversity target and mainstream the concept of biodiversity across NTPC's value chain to promote sustainable development. So, biodiversity policy 2022 किसका है? NTPC. The next is हर घर दस्तक 2.0 campaign. It's by Ministry of Health and Family Welfare. And ये second version है. इसका पहला version November 2021 में launch हुआ था. And under this campaign, door to door, it's basically door to door drive for the COVID-19 vaccination and spreading awareness about this vaccination. So Har Ghar Dastak 2.0 is related to COVID-19 vaccination. Next, Bharat Gaurav Trains. Bharat Gaurav Train is a scheme which was announced in 2021 to promote domestic tourism. देखो अपना देश. Now, अभी recently news में है because Indian Railway की जो southern zone है, it has flagged off country's first privately run train under this Bharat Gaurav train scheme between Coimbatore and Shirdi. Then next, UNESCO reserve list में ये जो national park इसको add किया गया है, Kuvsgul Lake National Park. It's of Mongolia. So आपको बस ये national park पता होना चाहिए कहाँ का है, मंगोलिया का. Next, EASE 5.0 Enhanced Access and Service Excellence. ये लॉन्च किया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, निर्मला सीतारमन. एंड it's basically the common reforms agenda for public sector banks. So EASE 5.0 is related to public sector banks. It focuses on this enhanced digital experience and inclusive banking, etc. Now, Kerala is ranked first in the Asia's Global Startup Ecosystem Report and fourth in the world. So, Global Startup Ecosystem Report में Asia में first and world में fourth. Also ranked fourth in this affordable talent. Then next, Delhi Startup Policy. Delhi Startup Policy is basically to make Delhi the most preferred destination for startups by 2030. 2030 तक इसे most preferred destination बनाना है startup के लिए. इसका basic aim यही है. और startup capital of India is Delhi. Earlier it was Bengaluru. Now India's biggest drone festival, which is also known as Bharat Drone Mahotsav 2022, कहाँ पे inaugurate हुआ है ये? Means inaugurate हुआ था प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में by Prime Minister on 27th of May 2022. And on this occasion, our Prime Minister also flagged off 100 Kisan drones. ये 27th May 2022 को inaugurate किया गया था फेस्टिवल. और February 2022 को जो भी ड्रोन्स है उसके इंपोर्ट पे बैन लगाया गया था यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू in order to promote the indigenous development of drones. Next is Abha app. It's basically Ayushman Bharat, this health records app. Earlier it was known as National Digital Health Mission Health Records app, NDHM Health Records app. Now it's the updated version of the previous app and some more functions and features are added. Now the individuals, they can access their health records anytime, anywhere. They can also link the health records created at the Ayushman Bharat Digital Mission, and it enables them to create the Abha address which can be linked with a 14-digit randomly generated Abha number. So ये इसका upgraded version है जिसमें ज़्यादा फीचर्स प्रीवियस वाले ऐप से हैं. नेक्स्ट इज यूसीसी इन उत्तराखंड. सो एक्सपर्ट कमिटी
headed by retired Supreme Court Judge Justice Ranjana Prakash Desai, was constituted by the government of Uttarakhand. तो अब उत्तराखंड में यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने की बात करी जा रही है, उसके लिए ये एक्सपर्ट पैनल बिठाई गई थी। उसको हेड कौन कर रहे थे? रंजन प्रकाश देसाई। अभी ये दिसंबर में न्यूज़ आई है और ये न्यूज़ निकली थी, उसमें बोला गया था कि जो ये एक्सपर्ट पैनल है इसे 6 मंथ्स के लिए और एक्सटेंड करेंगे, तो ये मई तक चलेगा। देन गोवा इज द ओनली स्टेट विच हैज़ द यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, एंड गुजरात और उत्तराखंड में इसे लाने की बात की जा रही है। देन लद्दाख रिकॉर्डेड द हाइएस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ इन द कंट्री, दैट्स 1104. Ladakh, then followed by Arunachal, and then Andaman and Nicobar Islands. So Ladakh, Arunachal, and Andaman and Nicobar Islands. Now, ये जो data है, ये it's as per this annual report, and which is Vital Statistics of India, based on Civil Registration System 2020. And this report is published by Office of the Registrar General and Census Commissioner. Then next, NatGrid Campus. NatGrid, National Intelligence Grid. So this NatGrid campus was inaugurated by our Home Minister Amit Shah, where? Bengaluru. So NatGrid campus कहाँ पे आया है? बेंगलुरु में. एंड ये जो प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट किया गया था 2009 में, आफ्टर द मुंबई टेररिस्ट अटैक. India's first lavender festival in Bhadarwa, Jammu, inaugurated by Minister of Science and Technology. Now this Bhadarwa is the birthplace of India's Purple Revolution, and it's also the best place for the lavender cultivation in terms of the climate, topography and different factors. So ये इंडिया का पहला लैवेंडर फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट हुआ है? भादरवा. द नेक्स्ट, कॉस्मोस मालाबारिकस प्रोजेक्ट. अब इस प्रोजेक्ट के नाम में ही मालाबार दिख रहा है हमें. केरला रीजन. सो केरला गवर्नमेंट एंटर्ड इनटू एमओयू, दिस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, विद द नेदरलैंड्स. डच, बेसिकली डच पीपल यहाँ पे होते हैं नेदरलैंड्स में. सो हमें कुछ डच के डॉक्यूमेंट्स मिले तो वहाँ से हमें केरला की हिस्ट्री पता चलेगी, तो उसी से रिलेटेड ये है. केरला गवर्नमेंट एंटर्ड इनटू दिस एमओयू विद द नेदरलैंड्स फॉर दिस कॉस्मोस मालाबारिकस प्रोजेक्ट, एंड ये प्रोजेक्ट 6 साल तक चलेगा. The time period for this project is 6 years, and the purpose is to further increase the understanding of Kerala, means and increase this political, social, cultural history of the Kerala, means जो भी इसकी political, social, cultural history थी वो सब के बारे में जान पाएंगे हम लोग, using this 18th century Dutch documents. अब ये जो 18th century Dutch documents है, it gives information about the period in the Kerala between the 1643 and 1852. तो ये जो टाइम पीरियड है, इस बीच में जो केरला की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या था, कल्चरल हिस्ट्री क्या था, सोशल हिस्ट्री क्या था, वो हम जान पाएंगे. इसलिए हमने ये नेदरलैंड के साथ एमओयू साइन किया है. Then Kwar hydroelectric project. This Kwar hydroelectric project is located on river Chenab in the Kishtwar district of the Jammu and Kashmir. Now, the Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by our Prime Minister, has approved the investment for 540 megawatt of this Kwar hydroelectric project. एंड ये जो क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है, ये इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड. सो चेनाब रिवर पे भी है और इम्प्लीमेंट कौन करे? चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड. एंड इसका बेनिफिट यही है दैट दिस प्रोजेक्ट विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट, आई गेस अप्रॉक्सीमेटली 2500, आई गेस, आई एम नॉट श्योर. द नेक्स्ट इज जोरहट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट. ये कहाँ पे आ रहा है? असम में, बाय ऑयल इंडिया लिमिटेड. नाउ ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? द हाइड्रोजन विच इज जनरेटेड यूजिंग द रिन्यूएबल सोर्सेज. Now green hydrogen is produced from the electricity that is generated by the solar plant. So इसमें ये जो green hydrogen लोग electricity से produce कर रहे हैं, and that electricity is produced using this solar plant, using this AEM technology, anion exchange membrane technology, and it's first time used in India. Now next, 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड मिला है इंडिया की 2 cities को, मुंबई एंड हैदराबाद, and these 2 cities are recognized as a tree city by United Nations Food and Agricultural Organization as well as Arbor Day Foundation. So UNFAO and Arbor Day Foundation. Next, ये ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम क्या है, इसको जानते हैं. इट्स बेसिकली एन इंटरनेशनल एफर्ट टू recognize the cities as well as towns which are committed to ensure that their urban forest and the trees are properly maintained, sustainably managed as well as duly celebrated.
नाउ वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल कहाँ पे आ रहा है? शिंकुला पास, मीन्स कहाँ पे है ये? शिंकुला पास, वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल. शिंकुला पास basically connects the Lahore Valley of the Himachal Pradesh to the Jaskar Valley of the Ladakh. So this pass connect Himachal Pradesh to the Ladakh. Samarth initiative, ये इनिशिएटिव लॉन्च हुई थी ऑन द ओकेजन, वो भी लास्ट ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2022, लास्ट ईयर. एंड लास्ट ईयर जो थीम था इंटरनेशनल वुमेन्स डे का, इट वाज जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो. एम क्या है स्कीम का? टू प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट एंड मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस टू द वुमेन. इस बार का भी थीम देख लेते हैं. थीम फॉर 2023 वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, इट इज डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी. यहाँ पे जो डिजिटल लिखा है ना, इट्स बेसिकली देखने में लग रहा है डिजिट ऑल, मीन्स डिजिटाइज एवरीवन, डिजिटाइज ऑल. सो इट इज डिजिटल. Digital means promote gender equality by adopting various technologies or by adopting various innovative methods. So inclusion of this digital world or digital technologies to promote gender equality. So digital innovation and technology for gender equality. अब ये campaign है जो इससे related है, embrace equity campaign. Next, Sujlam 2.0 campaign. This Sujalam 2.0 campaign is launched by Union Minister of Jal Shakti, गजेंद्र सिंह शेखावत. एम क्या है इसका? मैनेजमेंट ऑफ द ग्रे वाटर थ्रू द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल. सो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से हम लोग ग्रे वाटर को मैनेज करेंगे. ग्रे वाटर क्या होता है? डोमेस्टिक वेस्ट वाटर विच इज जनरेटेड इन द हाउस होल्ड्स और द ऑफिस बिल्डिंग एटसेट्रा. सो सुजलम 2.0 कौन से मिनिस्ट्री का है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. नेक्स्ट, वाहिनी स्कीम. ये सिक्किम गवर्नमेंट का स्कीम है फॉर द गर्ल्स एंड बेसिकली टू प्रोवाइड the free and safe sanitary pads to the secondary and senior secondary school going girls class 9 to 12th, to curb the dropouts and to raise awareness about the menstrual hygiene. So Bahini scheme, it's related to it means the scheme is of Sikkim government. The next, India's first 100% women owned industrial park, means industrial park कहाँ पे? और साथ के साथ ये women owned है, 100% women owned industrial park. ये आ रहा है हमारा हैदराबाद. Now, UP builds highest number of Amrit Sarovars. UP has become the first state in the India to construct approximately 8,000 or 8,462 Amrit Sarovar lakes, and it's twice the total Amrit Sarovar which is developed by these four states, that is MP, Jammu and Kashmir, Rajasthan and Tamil Nadu. Now, UP में top performer कौन है अमृत सरोवर में? It's Lakhimpur Kheri, important for UPPSC, and then Gorakhpur, then third is Pratapgarh. Now, this Amrit Sarovar mission, it was launched by Government of India on this Panchayati Raj Day, 24th of April. So 24th April को पंचायती राज दिवस भी celebrate होता है. So this Amrit Sarovar ये है क्या? To promote this scheme basically aims to promote water conservation by development and rejuvenation of the water bodies in all the districts across the India. So जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे कोई वाटर बॉडी पहले थी बट अब नहीं है या फिर थोड़ी पॉल्यूटेड हो गई है तो उनको रेजुविनेट करना, वापस से रिकवर करना, और अगर नहीं है तो डेवलप करना. This is the last part in the Drishti National Current Affairs series. So the first is Rajya Sabha passed the bill to extend this ST status to the Gond community in the 4 districts of UP. So UP के 4 डिस्ट्रिक्ट में जो भी गौंड कम्युनिटी है उन्हें ST स्टेटस दिया जाएगा. सो कौन सी है वो 4 डिस्ट्रिक्ट? संत कबीर नगर, यहाँ मैप में लोकेशन दिया हुआ है, देन दिस संत रविदास नगर, देन कुशीनगर एंड देन चंदौली. सो दीज आर दोज 4 डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे गौंड कम्युनिटी को ST का स्टेटस प्रोवाइड किया जाएगा. Next, Electricity Amendment Bill 2022. It seeks to amend this Electricity Act of 2003. The nodal agency here is Ministry of Power, and जो amended act है उसमें 4 provisions हैं. Let's see them. More than one power distributor can operate in an area. Then next, mandatory maximum and minimum fixing of tariff ceilings. The cross subsidy balancing fund will be provided by the state government, and the CERC, that is Central Electricity Regulatory Commission, will grant the licenses for distribution of electricity in more than one state. अगर इलेक्ट्रिसिटी को एक स्टेट से ज़्यादा में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हमें लाइसेंस कौन प्रोवाइड करेगा? CERC प्रोवाइड करेगी. Then next, Competition Amendment Bill 2022. It seeks to amend Competition Act of 2002. Here, the nodal agency or the ministry is Ministry of Corporate Affairs. Now,
इसका एम क्या है? इट रेगुलेट मर्जर्स एक्विजिशंस बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस. नाउ अभी जो अमेंड हुआ है उसमें क्या है? ट्रांजैक्शंस वर्थ ऑफ वैल्यू more than 2000 crore will require CCI's approval. Also, if there is any business or that business executes a combination, in that case also it needs to inform the commission CCI. CCI can frame the regulations to assess whether the enterprise or a company has substantial business operations in India or not. Then the last is this Energy Conservation Amendment Act 2022. It seeks to amend this Energy Conservation Act of 2001. Now ये जो amended act है, it allows, इसमें ये जो भी provisions करेंगे वो सारे amended act के हैं. It empowers the central government to provide for the carbon trading scheme. Means अगर central government चाहे तो carbon trading scheme means उसको empower करती है, permit करती है कि वो carbon trading scheme ला सकती है. Then also specifies the standards for the energy consumption per square meter. So specifies the standard for energy consumption per square meter. Also there's the inclusion of large buildings, vehicles, vessels under this conservation standards. They all are now included. These all are done to promote the sustainable habitat, and there's a minimum limit to meet the demand from non fossil sources. Means ये जो भी इसके अंदर इंक्लूड हो रहे हैं उन सबको मिनिमम लिमिट है, मीन्स उनको जो अपनी डिमांड है उसके कोई लिमिट रखी है जो उनको नॉन फॉसल सोर्सेज और रिन्यूएबल सोर्सेज से मीट करना ही करना है. अगर वो ये लिमिट को नहीं करेंगे तो उन पे फाइन लग सकता है अप टू 10 लाख रुपीज. नाउ नेक्स्ट इज दिस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल. It seeks to implement the provisions, means it implement the provisions of sites. अब इसके अंदर क्या है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डेजिग्नेट करेगा मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड साइंटिफिक अथॉरिटी. मैनेजमेंट अथॉरिटी परमिट करेंगे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट फॉर द ट्रेड ऑफ स्पेसिमेंस, एंड ये जो साइंटिफिक अथॉरिटी है दे विल गिव एडवाइस regarding the impact on the survival of the specimens being traded. Then ये स्टेट एक ऐसी इंफॉर्मेशन है, स्टेट गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर द एरियाज विच आर एडजेसेंट टू द नेशनल पार्क्स और द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एज अ कंजर्वेशन रिजर्व in order to protect the flora and fauna. Then prohibition of child marriage amendment bill 2021. पहले ये था कि मेल के लिए तो 21 तो पहले भी था, फीमेल के लिए 18 था मैरिज एज, बट नाउ अब फीमेल के लिए भी 21 कर दिया गया है और इसने अमेंड किया है दिस प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 को. नेक्स्ट, दिस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021. This bill encourages patenting, and it will encourage the farmer to increase cultivation of the medicinal plants. And it has decriminalized certain provisions. Means पहले अब ये जो amended bill है इसको थोड़ा सा पहले बहुत ज़्यादा restrictions थे, उन restrictions को हटा दिया गया है to promote the research and to explore more biological resources. So it has decriminalized certain provisions. Also it has exempted the registered Ayush medical practitioners from the prior intimation to state biodiversity boards from assessing. Means जो आयुष मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं पहले अगर उन्हें कोई बायोलॉजिकल रिसोर्स चाहिए होता था किसी भी चीज़ के लिए या कोई भी रिसर्च करने के लिए किसी भी कारण से उन्हें अगर चाहिए होता था तो पहले वो स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड से परमिशन लेते थे, तो काफ़ी टाइम लग जाता था इन सब चीज़ों में. सो अभी तो फिर मतलब जब इतना टाइम लगेगा तो लोग इसे कम प्रेफर करेंगे. तो इन ऑर्डर टू बूस्ट और इन ऑर्डर टू इनकरेज दिस पेटेंटिंग एटसेट्रा एंड प्रमोट रिसर्च, अभी ये जो है आयुष मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है दैट दे नीड नॉट रिक्वायर दिस परमिशन फ्रॉम द स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स. Mediation bill this mediation bill 2021, it aims at institutionalizing mediation as well as establishing this mediation council of India. अब इसमें जो डिस्प्यूट्स जो फिट नहीं है मीडिएशन के लिए वो कौन कौन से हैं, मतलब कौन 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 से डिस्प्यूट्स हैं जिसमें मीडिएशन नहीं हो सकता है. दैट इज क्लेम्स अगेंस्ट द माइनर्स एंड और द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. अगर कोई माइनर है या फिर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, उनका अगर कोई क्लेम कर रहा है कि ये मेरे कस्टडी में एटसेट्रा, तो उनसे रिलेटेड डिस्प्यूट, क्योंकि वो जो माइनर है या फिर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है उनके पास उतनी समझ नहीं है कि वो बोल सकें, मतलब वो डिसाइड कर सके, तो ऐसे डिस्प्यूट्स पे ये मीडिएशन बिल काम नहीं करेगा. देन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, देन ऐसे डिस्प्यूट जो कि
थर्ड पार्टी के राइट्स को अफेक्ट कर रहा है. देन दिस लिस्ट, और ये जो लिस्ट है ना, इट कैन बी अमेंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. सो इसमें पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है. Then this bill applies to mediations conducted in India involving. अब ये जो बिल है ये इंडिया में जो मीडिएशन, जो भी डिस्प्यूट है मतलब जिससे डील करती हैं, जो ओनली डोमेस्टिक पार्टीज, या एटलीस्ट अगर वो इंटरनेशनल मीडिएशन है तो एटलीस्ट वन फॉरेन पार्टी रिलेटिंग टू अ कमर्शियल डिस्प्यूट. सो दिस बिल अप्लाइज टू मीडिएशंस कंडक्टेड इन इंडिया एंड इन्वॉल्विंग ओनली डोमेस्टिक पार्टीज, और अगर वो इंटरनेशनल मीडिएशन में है तो एटलीस्ट वन फॉरेन पार्टी एंड रिलेटिंग टू अ कमर्शियल डिस्प्यूट, एंड इट शुड बी रिलेटेड टू अ कमर्शियल डिस्प्यूट. Then 127th Constitutional Amendment Bill. This bill restores the state's power to specify the socially, educationally and backward castes. ये बिल लेकर आई है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. दिस बिल अमेंड्स दिस आर्टिकल 342A, 366 clause 26C and article 338B clause 9. Then it is designed to clarify that the state or union territory can maintain the state list of OBCs. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसमें ये जो लिस्ट की जो पावर थी वो दे दी थी प्रेसिडेंट को, और जो प्रेसिडेंट है वो बिल प्रिपेयर करेगा विद परमिशन विद कंसल्टेशन विद दैट एनसीबीसी. तो इसमें स्टेट से पावर ले ली गई थी. तो अभी जो ये यूनियन गवर्नमेंट है इसने ये बिल इनैक्ट करा है ताकि टू इन ऑर्डर टू रिस्टोर द पावर ऑफ द स्टेट टू प्रिपेयर दिस स्टेट लिस्ट ऑफ द ओबीसी. So it has this bill is designed to clarify that the states or union territories, they can maintain the state list of the OBCs. President can notify this list of socially educational backward class again, but यहाँ पे only for the purposes of central government, and that too after consulting the governor. तो यहाँ पे एनसीबीसी का कोई रोल नहीं है. यहाँ पे गवर्नर को कंसल्ट करके अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है तो प्रेसिडेंट कैन नोटिफाई द लिस्ट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. दैट इज यहाँ पे लिखा भी है ओनली फॉर द पर्पसेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. द सेंट्रल लिस्ट, अब जो सेंट्रल लिस्ट, ये तो स्टेट लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट कौन प्रिपेयर करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट. अब यहाँ पे मैंने वही शॉर्ट में लिखा था वाई, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट रूलिंग थी मराठा रिजर्वेशन में, उसमें उन्होंने 102 अमेंडमेंट एक्ट को तो अपहेल्ड करा था, और ये भी बोला था कि प्रेसिडेंट विल डिटरमाइन द कम्युनिटीज टू बी इंक्लूडेड इन द स्टेट ओबीसी लिस्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दैट एनसीबीसी. तो इसी को स्ट्रक डाउन, इसी को हटाने के लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट लाई है इन ऑर्डर टू रिस्टोर द स्टेट्स पावर टू स्पेसिफाई दी एसईबीसीज. सो हमारा ये नेशनल करंट अफेयर्स ख़त्म हो चुका है. अब काफ़ी लोग, मैंने पहले भी बोला था पीडीएफ के लिए कि आप लोग इसके नोट्स बना सकते हैं, बट स्टिल मैनी पीपल आर इंसिस्टिंग. सो मैं इसका पीडीएफ, जैसे कि नेशनल करंट अफेयर्स को लगा ना 4 से 5 लेक्चर, उसके बाद फिर मैं डेली अपडेट नहीं कर पाऊँगी बिकॉज थोड़ा इशू हो जाएगा. सो ड्यू टू दिस टाइम कंस्ट्रेंट्स आई वोंट बी एबल टू अपलोड द पीडीएफ ऑन अ डेली बेसिस. सो जैसे नेशनल करंट अफेयर्स खत्म हो गया तो मैं नेशनल करंट अफेयर का पीडीएफ डाल दूंगी. फिर जैसे अब हम लोग करेंगे यूपी करंट अफेयर्स, तो आई अपलोड द यूपी करंट अफेयर्स एंड आई विल डू दैट इंटरनेशनल. तो मीन्स डेली बेसिस पे नहीं आएगा, जैसे जैसे कंप्लीट हो जाएगा मैं वैसे वैसे पीडीएफ डाल दूंगी. और इसके लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी कल क्रिएट करा है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं. मैं लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में. और आज थोड़ा वॉइस इशू रहा है बिकॉज थोड़ा आई एम नॉट क्वाइट वेल. सो बस आज के लिए, एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब. बिकॉज मैं कमेंट करने को तो नहीं बोलती, बट आप लाइक करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, किस आप लोगों को पसंद आए. सो थैंक यू.